Good evening, everyone. Today we will do a very interesting topic, that is extortion. Section 383 to Section 389 Indian Penal Code. Section 383 states extortion as intentionally putting a person in fear of injury. Injury, Section 44, injury to mind, body, reputation, property. Intentionally putting a person in the fear of injury to that person or to any other. Any other can be stranger. And thereby dishonestly induces the person to put in fear to deliver. So extortion का base ही यही है, putting a person in fear of injury and thereby making a person to deliver any property, valuable security, anything signed, sealed, which may be converted into valuable security. The punishment is 3 years or fine or both, up to 3 years or fine or both. 385 is nothing but attempt to do extortion. So punishment is up to 2 years. 386 is extortion by putting the person, हमने 383 में पढ़ा है, the extortion by putting a person in fear of injury. यहाँ पे injury specified है, that is a death or grievous hurt. 386. So 387 is nothing but attempt of 386, putting a person in fear of death or grievous hurt in order to do extortion. This is what 387 is. 388 is extortion. यहाँ पे भी injury कौन सी है वो डिफाइंड है. एक्सटॉर्शन में पुटिंग ए पर्सन इन फेयर ऑफ एक्यूजिशन, कि तेरे पे इल्ज़ाम लगा दूंगा मैं, तेरे पे इल्ज़ाम लगा दूंगा मैं ऑफ एनी ऑफेंस जिसका की पनिशमेंट रहेगा या डेथ, एलआई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर अप टू 10 years तक. And or having attempted or to induce any person to कि तू abet ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ person ਨੂੰ ਇਹ offense ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, punishment up to 10 years ਹੈ. and ਜੇ ਤੁਸੀਂ 377 ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ person ਨੂੰ extortion, ਕਿ ਉਸ again 377 has been decriminalized as far as two consenting adults are concerned, not when there is no consent of one adult. So it covers that part of 377. 388, 389 is nothing but attempt of 388 in order to do extortion, putting a person in, मतलब extortion करने के लिए बट हो नहीं पाई. सो हम इस बैकग्राउंड के साथ एक्सटॉर्शन की बेयर लैंग्वेज तो पढ़ चुके हैं. इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी, और इस इंजरी को पर्टिकुलरली डिफाइन कर रखा है, मतलब स्पेसिफाई कर रखा है 386 में और 388 में. और 383 का स्कोप बहुत वाइड है. इट सिंपली टॉक्स ऑफ इंजरी. सो इंजरी के लिए सेक्शन 44 को ही दिमाग में रखना पड़ेगा. इंजरी टू माइंड, बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज एक्सटॉर्शन? विल इज ओवरपावर्ड एंड द पर्सन इज डिलीवरिंग. ऑफेंडर नीड्स नॉट टू प्रेजेंट देयर, बिकॉज वहां पे प्रेजेंट है, डिलीवरी देयर एंड देन तो फिर रॉबरी हो जाएगी. यहाँ पे ऑफेंडर नीड्स नॉट टू बी प्रेजेंट देयर, डिलीवरी नीड्स नॉट टू बी इमीडिएट. थ्रेट मस्ट बी बिकॉज ऑफ द पर्सन एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिज ऑफिशियल अथॉरिटी. एक डिप्टी कमिश्नर, एक एसडीएम, एक जुडिशियल ऑफिसर आपको थ्रेट दे रहा है अपनी पोस्ट का, वो एक्सटॉर्शन में नहीं आएगा, वो मिस यूज ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी में आएगा. डिफरेंट रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी एंड ऑफिशियल वर्किंग एक्ट के लग जाएंगे. सो एलिमेंट ऑफ फोर्स कम्स इन एंड देयर बाय पर्सन डिलीवर्स. डर लग गया और बंदे ने डिलीवर कर दिया. Property can be corporeal as well as incorporeal, tangible, intangible, and the fear must be of such a nature which is capable of unsettling the mind. Now the point comes, which I have specifically mentioned, whether the threat of real accusation is extortion or not. Yes, it is, because here's the case of Honorable Supreme Court A. Sheikh versus. I mentioned this case for you. A. Sheikh versus. Sorry, Sheikh की जगह कुछ और लिखा गया. Sheikh versus स्टेट ऑफ गुजरात. आई सिंपली मेंशन गुजरात, समझ जाइएगा. ए शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2007 का केस है. इसमें क्लियरली हेल्ड दैट द टेरर ऑफ क्रिमिनल चार्ज वेदर ट्रू और फॉल्स अमाउंट्स टू फेयर ऑफ इंजरी एंड अमाउंट्स टू एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द पार्टी थ्रेटन्ड इज इमटेरियल. वो एक्चुअल में गिल्टी है, इमटेरियल. लुक, a person has done an offense. You have seen him doing the offense. Maybe he is doing it in his private defense. You never know. वो प्रूव ही ना हो पाए, कोर्ट उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी में एब्सॉल्व कर दे उसकी लाइबिलिटी से. You never know. So extortion is nothing but putting a person in fear of injury and thereby making the person to deliver something. Thank you.